PM's blazing attack on Gathbandhan. Congress didn't want RJD to have CM post, says PM Modi. Over 80, including JTU leader Anand Singh, arrested in Mokama murder case. Nitish Kumar's big post on Bihar's transformation highlights 20 years of reforms in education sector. Bihar politics boils as Rahul Gandhi goes fishing for votes. Hello and welcome to Bihar Election Tracker, your go-to source for key updates as the state prepares for high-stake assembly election. I'm Muskan, bringing you the latest from the campaign trail. Let's dive into the details. In just 3 days, the curtains will fall on the mega campaign trail, and ahead of that, Prime Minister Narendra Modi hit the ground running in Bihar. After addressing back-to-back rallies in Ara and Nevada, Prime Minister held a massive roadshow in Patna, accompanied by senior BJP leaders from the state. However, Bihar Chief Minister Nitish Kumar was notably absent from the event. While addressing a rally in Ara, Prime Minister Modi accused the opposition of political hooliganism and claimed that the RJD has snatched the Chief Minister's post from the Congress at gunpoint. Listen in. एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। इनके इरादे बहुत खतरनाक हैं और इसलिए आपको आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है, वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। During his roadshow, Prime Minister Modi also paid floral tributes to the statue of noted Hindi poet Ramdhari Singh Dinkar in Patna. Earlier in the day, addressing a rally in Nevada, he took a jibe at the opposition, accusing previous governments of neglecting small farmers and focusing only on vote bank politics. After a packed day of campaigning, Prime Minister Modi visited Patna Sahib, one of 5 sacred texts of Sikhism and the birthplace of Guru Gobind Singh. Moving on, JDU candidate Anand Singh has been sent to a 14-day judicial custody in connection with murder of Jan Suraj supporter Dular Chand Yadav. Dular Chand Yadav, a gangster turned politician who was also formerly associated with Rashtriya Janata Dal, was killed while campaigning in Mokama for his nephew Priyadarshi Piyush on Thursday. Along with Anand Singh, over 80 accused have been arrested by the police. However, the victim's grandson continues to insist that some of the accused are still roaming free and that his life is under threat. Listen in. अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा,
तो अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है। वो चारों चेला मेरे लिए खतरा ही है। सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म, कि चारों को जो भी बचे हुए हैं चारों को जेल के अंदर किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और हमको फांसी ही चाहिए, फांसी के सिवा कुछ। Bihar Chief Minister Nitish Kumar has shared a detailed post on X highlighting his government's work in transforming education in the state over the past 2 decades. In his post, Nitish Kumar said that before 2005, Bihar's education system was in complete disarray. Schools were in ruins. There were severe shortage of teachers and lakhs of children, especially from poor and minority communities, were out of school. He said that after his government took charge in 2005, improving education became a top priority. The education budget, which was just rupees 4,366 crore back then, has now risen to nearly rupees 61,000 crore, about 22% of the state's total budget. Nitish Kumar wrote that the number of schools in Bihar has gone up from around 54,000 in 2005 to over 75,000 today, with high schools now established in every panchayat. He added that nearly all hamlets in Bihar now have access to government school. The Chief Minister also pointed out that more than 6 lakh teachers have been appointed, including those regularized through competency tests, making it one of the largest teacher recruitment drive in India. Moving on, as the political heat peaks in Bihar, Congress leader Rahul Gandhi made a headline with unexpected move, quite literally by jumping into a pond to catch fish. The Congress MP took some time off the campaign trail in Begusarai, where he was seen fishing alongside Mahagathbandhan's ally Mukesh Sahni, whose alliance Deputy Chief Minister faced. A large number of local fishermen were also present at the spot, some even joining the leaders in a waist-deep water as Rahul Gandhi tried his hand at catching fish. The Congress shared the video on its X handle saying Rahul Gandhi interacted with the fishermen about the challenges and struggles they face in their daily lives. But the pond-side politics soon drew sharp reactions. Opposition leaders mocked the Congress leader, saying he had nothing better to do and was resorting to gimmicks out of fear of an impending defeat in the Bihar elections. राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा सर? वो कह राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा सर? वो कह राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा सर? वो कह राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। For daily in-depth updates on everything shaping Bihar political landscape, stay tuned to NDTV's Bihar Election Tracker.